Welcome to this video. In this video, we are going to discuss the functions of a complex variable and some important mappings. We know in real analysis, we have this kind of scenario y equal to fx, where this x is works as an input and this y is output. ये जो फंक्शन है दैट हैज सम स्पेसिफिक डेफिनेशन फ्रॉम ए टू बी वी राइट दिस ओके फंक्शन एफ डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी तो यहाँ पर जो इनपुट होंगे दीज एक्स विल कम फ्रॉम ए एंड द आउटपुट विल गोज इनटू बी so here this x belongs to a and the y is element of b. In the case where this A is interpreted as domain and this B is codomain. Okay. Now, if we collect all the elements in B for which there exists some x in A such that f of x is equal to that element, अगर हम उन सारे एलिमेंट्स को कलेक्ट कर लें तो हमें रेंज सेट भी मिलेगा रेंज ओके तो जब भी हम फंक्शन की बात करेंगे तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं डोमेन कोडोमेन एंड रेंज ठीक है ये जो सिमिलर काइंड के कंसेप्ट हैं वो सेम कंसेप्ट कॉम्प्लेक्स के केस में भी है जहाँ पर हम डोमेन और कोडोमेन कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के कोई सबसेट्स होंगे ठीक है सो वी आर स्टार्टिंग बाय राइटिंग द डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन ओके सो आई थिंक यू नो दिस आइडिया वेरी वेल जो हमने फंक्शन अभी तक पढ़े हैं रियल एनालिसिस में हालांकि जो कोर आइडिया है वो सेम है बट फिर भी कुछ डिस्टिंक्ट्स है जो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं ठीक है सो लेट अस स्टार्ट द डेफिनेशन definition of what definition of complex function complex function okay so how we will interpret this definition a complex function is a function f whose domain and codomain are subsets of the set of complex numbers that is C. I think you know very well what is C. C is Z equal to x plus iota y where x and y are element of R and I square is equal to -1 जिसको हमने इमेजिनरी यूनिट भी बोलते हैं ठीक है सो दिस इज द डेफिनेशन और डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन नाउ जब भी हम फंक्शन की बात करते हैं हम ये कहते हैं कि फंक्शन जैसे हमने लिखा दैट y इक्वल्स टू एफ एक्स तो उस केस में फंक्शन के लिए इनपुट कोई वेरिएबल बनता है और आउटपुट भी कुछ वैल्यू आएगी तो यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन है आई एम राइटिंग हियर a complex function is also called a complex valued function valued means इनपुट देने के बाद जो आउटपुट आ रहा है उसको हम बोलते हैं वैल्यू ऑफ द फंक्शन ऑफ
a complex variable, complex वेरिएबल। जब भी हम आ, अगर यूज़ करें कॉम्प्लेक्स फंक्शन, इसका मीनिंग है इसका डोमेन और कोडोमेन दोनों ही कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम के सबसेट्स है। ठीक है, नोटेशन क्या है? दीज आर द जनरल नोटेशन वी यूज, w इक्वल्स टू एफ ऑफ जेड। ठीक है, वेयर जेड इज एक्स प्लस आइटा वाई। ठीक है, तो ये बात हुई कॉम्प्लेक्स फंक्शन की। ठीक है, कुछ फंक्शन जैसे कि हमने एफ जेड इक्वल टू जेड माइनस आइटा डिफाइन कर दिया, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने लिख दिया एफ जेड इक्वल्स टू जेड माइनस आई आइटा। ठीक है, so we can write this fz equal to z minus iota, or we can write w equals to z minus iota. ठीक है, so this is how we can interpret the complex function. Now we, अब हमारे पास ये है कि अगर हमारे पास complex function है, then how can we calculate the value of function at a specific point? Okay, so यहाँ पर क्या है, calculating the value of complex function at a point. ओके, ये हम कैसे करेंगे? सो लेट एफ ऑफ जेड इज गिवन एज सपोज जेड स्क्वायर माइनस से 2 प्लस आइटा जेड, देन व्हाट इज एफ ऑफ आइटा? तो इसका मीनिंग क्या है? वी विल पुट आइटा इन प्लेस ऑफ जेड, सो एफ ऑफ जेड, एफ ऑफ आइटा विल बी iota square minus 2 plus iota, then iota, and it is equals to minus 1 minus 2 iota and plus 1. The resultant answer is minus 2 iota. Okay, so this is how we can calculate the value of complex function at a specific point. Okay, now ऐसा भी हो सकता है कि हमें कॉम्प्लेक्स फंक्शन के बारे में जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन जब हम डिफाइन करते हैं तो वहाँ पर डोमेन और कोडोमेन हमें स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ वी टेक एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू जेड अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 1, देन व्हाट इज द डोमेन फॉर दिस फंक्शन? ओके, इसका डोमेन क्या है ये हमने पता करना है। ठीक है, तो हमने ये पता है कि जहाँ पर ये फंक्शन एग्जिस्ट करेगा वहाँ वो ही और कहाँ से हम जेड को एज ए इनपुट दे सकते हैं, वो सारा सेट एज अ डोमेन हमारे लिए वर्क करेगा। सो वी आर श्योर दैट फॉर जेड इक्वल टू आइटा और प्लस माइनस आइटा, जेड स्क्वायर प्लस 1 becomes 0. This implies that fz is defined for every value of z except z equal to प्लस आइटा एंड माइनस आइटा। तो इसका मतलब क्या है? डोमेन क्या बनेगा? देयरफॉर thus the domain of definition will be, we can exclude plus iota and minus iota from the set of complex numbers. So we will have like C excluding iota and minus iota. So this will be the domain for f set. So हो सकता है हमें explicitly ना given हो domain और codomain, but by just looking at the definition we can identify the domain for the function also. Okay,
Now come to the next part, real and imaginary part of a complex function. ठीक है, इसको हम किस तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं जब हमारे पास, क्योंकि जब कॉम्प्लेक्स का केस है तो रियल और इमेजिनरी का डिस्कशन मेरा बहुत ही ऑब्वियस सा है। तो इस केस में, क्योंकि W इक्वल्स टू एफ जेड लिखने से एफ जेड एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है, सो अगेन वी कैन थिंक अबाउट some kind of real and imaginary part of that complex function fz. Okay, so if we say, if W equals to fz is a complex function, then the image of a complex number z equal to x plus iota y under f is a complex number, again complex number W, which we are assuming u plus iota v. So here u is real part of the function and v is imaginary part of the function. Okay, so we can write this. तो अगर हम W इक्वस टू एफ जेड इस वाले रिप्रेजेंटेशन को कंसिडर करें, दैट मीन्स एफ जेड विल बी इक्वस टू यू एक्स कोमा वाई प्लस आइटा वी एक्स कोमा वाई। तो यहाँ पर हियर यू एक्स कोमा वाई इज रियल part of fz and that vx comma y is imaginary part of fz। ठीक है, तो इस तरीके से हम fz का रियल और इमेजिनरी पार्ट क्लासिफाइड कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल if we consider, suppose we are having w equals to z square। ठीक है, तो इसके लिए फॉर क्वेश्चन हम ऐसे लिखते, फॉर w equals to z square find real and imaginary part of w। okay, so how can we solve this? सिंस z हमेशा x प्लस आइटा y की फॉर्म में रहेगा, सिंस z इक्वल्स टू x प्लस आइटा y, therefore w equals to z square, that will be equals to x plus iota y square, and it will be equals to x square minus y square plus 2xy iota 2xy. So here you can see this is a real part and 2xy is imaginary part. So thus we can say, thus the real part of w is u x comma y equals to x square minus y square, and imaginary part of w is v x comma y equal to
टू एक्स वाई। अगर आप यहाँ पर नोटिस कर पा रहे हैं तो u और v दोनों ही रियल फंक्शन है जो कि दो वेरिएबल x और y के फंक्शन है। सो वी कैन से द रियल एंड imaginary part of fz are real valued functions of two real variables x and y। ठीक है। So this is how we can interpret the real and the imaginary part for a function। ठीक है। Now we will discuss some important functions like very initial and fundamental function, that is exponential function। Okay, so we will discuss exponential function। डेफिनेशन क्या है इसकी? द फंक्शन ez e to the power z defined by e to the power z equal to e to the power x plus iota y equals to e to the power x cos y plus iota sin y। Okay, this particular representation is known as exponential function, is called the complex exponential function। ओके, अगर हम इस फंक्शन के लिए रियल और इमेजिनरी पार्ट के लिए बात करें तो हमें क्या मिलेगा? व्हाट इज द रियल पार्ट? रियल पार्ट ऑफ e टू द पावर z विल बी e टू द पावर x cos y, और ये क्या है हमारा u x y फॉर e टू द पावर z फंक्शन, एंड imaginary part of e raised to z is equal to e to the power x sin y, which is our imaginary part, that is vxy। Okay, now we will identify value of this exponential function at some specific point, और यहाँ से हमें पता चलेगा कि किस तरीके से कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन रियल एक्सपोनेंशियल फंक्शन से अलग है। ठीक है, दिस इज वेरी क्रूशियल पॉइंट। ओके, सो द हेडिंग इज values of the complex exponential function, values of the complex exponential function। So first we will see when we take z equals to, first find e to the power z for z equals to I। ओके, तो इसके लिए हमने वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है, व्हाट विल बी e raised to z when z equals to iota। ओके,
So since e to the power z complex exponential function is defined as e to the power x plus iota y, which is equals to e to the power x cos y plus iota sin y. Okay. Now what is x here? We can write this as 0 plus iota टाइम 1. तो यहाँ पर x की वैल्यू 0 होगी और y की वैल्यू 1 है. ठीक है. Therefore we can say e to the power iota will be equals to e to the power 0 plus iota time 1. It will be equals to e to the power 0 and cos 1 plus iota sin 1, and it will be equals to e to the power 0 will be 1, and the result is cos 1 plus iota sin 1. So this is the value of the complex exponential function at z equal to iota. Now we are coming another value, find e to the power z at z equals to 2 plus pi iota. Okay. Let me talk about the complex real exponential function. We know that it looks like, if this is the real and the y-axis and the x-axis in r square, then what is exponential function? It will be looks like this is e to the power x and this is 1. Okay, this point is 0, 1. ये हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन. इसका मतलब क्या है कि दिस इज रियल एक्सपोनेंशियल फंक्शन. इसका मतलब क्या है? e टू द पावर x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r. तो रियल एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है. हियर वी आर सीइंग दैट. ओके. नाउ अगर हम यहाँ पर z इक्वल्स टू 2 प्लस आइटा रखें, देन so we have this one. Since e to the power z is equals to e to the power x cos y plus iota sin y. अब here x is equals to 2 and y equals to pi. Therefore e to the power 2 plus pi iota will be equals to e to the power 2 and cos pi plus iota sin pi, and cos sin pi will be equals to 0, so and cos pi will be equals to 1. So here we are having e to the power minus e square, and we know e square is positive, which is less than 0. This is a important conclusion about complex exponential function. So the first difference that we got in complex exponential function and real exponential function is that real exponential function is always positive. That means e to the power x is greater than 0, strictly greater than 0 for all values of real number. Okay. In complex exponential function it may be negative. जैसे हमने यहाँ पर देखा, यहाँ पर e to the power z is minus e to the power 2 for 2 plus pi iota. Okay. So complex exponential function can be negative, but the real exponential function not. Okay. Now we are coming to the exponential form of a complex number. So लेट मी राइट दी हेडिंग. और यहाँ पर हमें वैसे पॉइंट आउट कर देना चाहिए ये पॉइंट दैट सो द रियल एक्सपोनेंशियल फंक्शन is always positive, but complex
exponential function may take on negative values. ओके, जैसे यहाँ पर हुआ है. नाउ वी आर कमिंग टू दी वेरियस फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, और उसी में हम पढ़ेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म. सो वी आर हैविंग दिस हेडिंग हियर, वेरियस फॉर्म of a complex number z. ओके, सो सबसे पहले हम जो पढ़ने वाले हैं वो फॉर्म है कार्टेशियन. कार्टेशियन फॉर्म में हम z को कैसे लिखते हैं? z इक्वल्स टू x प्लस आइटा y, वेयर x and y both are element of R and I square is understood, that is equals to minus 1. So this is the Cartesian form for a complex number z. Now the another is polar form. For this is important, okay, for z is not equals to 0, केवल नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए. for z is not equals to 0, polar form is given by z equals to r cos theta plus iota sin theta. Now what is r and what is sin theta? Let us discuss this in the case of polar form. Suppose this is our real axis, imaginary axis and real axis. Suppose this is some point, this is the point z. So what is r? R is the distance, direct distance from the origin, this radial distance. Okay, this distance is r, and the angle, ये जो एंगल है जो कि इस ओरिजिन को और z को ज्वाइन कर रहा है, इस लाइन और पॉजिटिव रियल एक्सिस, आई एम सेइंग पॉजिटिव रियल एक्सिस के बीच में जो भी एंगल है, दैट इज थीटा. ओके, सो दिस इज अबाउट दी पोलर कोऑर्डिनेट्स. यहाँ पर r और थीटा को हम क्या बोलेंगे? पोलर कोऑर्डिनेट्स, r कॉमा थीटा. ये क्या है? पोलर कोऑर्डिनेट्स. The third, which is important, and that is due to the exponential function in the complex system. So third form is exponential form. ठीक है, ये कैसे लिखते हैं हम लोग? Using the same polar coordinates r and theta, we can write z as r. अभी जस्ट हमने जब कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ी थी तो हमने e टू द पावर z को कैसे लिखा था? e टू द पावर x cos y प्लस आइटा sin y. तो इसका मतलब y की जगह थीटा है और x की जगह 0 है. सो वी हैव e टू द पावर आइटा theta. You can write it, assume it 0 plus iota theta as well. And this form is known as complex form for a complex number z. Okay. अब हम इन सभी फॉर्म्स को कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं. So consider all above forms for suppose for z equals to 3i. तो इसके लिए कैसे हम इन तीनों फॉर्म्स को इंटरप्रेट कर सकते हैं? तो ये जो गिवन है इसी को हम क्या लिख सकते हैं? कार्टेशियन फॉर्म में कैसे लिखेंगे? फर्स्ट कार्टेशियन फॉर्म, that is given equals to z equals to 0 plus 3
आएटा। दिस इज सिंपली गिवन, जब भी हमें गिवन होगा वो कार्टेशियन फॉर्म में ही होगा। ओके, व्हाट अबाउट द पोलर फॉर्म? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव 3 आइटा इज नॉट इक्वल्स टू 0। ओनली देन जब नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है तब ही हम पोलर फॉर्म की बात करेंगे। सो हियर वी हैव, हियर यू कैन सी, इफ आई से and this is our point, this is our point 3 आइटा। ओके, तो अब हमें पोलर कोऑर्डिनेट या पोलर फॉर्म लिखने के लिए हमें पोलर कोऑर्डिनेट की ज़रूरत होगी। दैट मीन्स आर कोमा थीटा की हमें ज़रूरत पड़ेगी। आर का मीनिंग क्या है कि इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी है, तो वी नो कि ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस कितनी है, ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस है 3। सो दिस डिस्टेंस इज 3 फ्रॉम द ओरिजिन, दिस ओरिजिन। ओके, and what is the angle between this real axis, real positive real axis, and the line joining 0 and 3 iota, that is the radial vector? तो ये एंगल कितना है? We know this angle is 90 degree. This is equals to pi by 2. So what will be the polar form? Polar form will be like z r is 3 and cos pi by 2 plus iota sine pi by 2. So this is the polar form for 3 iota. Now what about the exponential form? ये बहुत फंडामेंटल टॉपिक्स है, बट हमें इनके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि जब हम आगे जाएंगे तब ये डायरेक्ट हम लोग यूज़ करने वाले हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं? z इक्वस टू आर, हियर यू कैन सी आर ई टू द पावर आयटा थीटा। नाउ अभी हमने देखा था कि 3 आयटा के लिए जो पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या बनेंगे? 3, इसके लिए पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या है? 3 कॉमा पाई बाई 2। आर की वैल्यू 3 एंड थीटा इक्वस टू पाई बाई 2। तो अगर हम इस वाले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में के एक्सप्रेशन में रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा? z इक्वस टू 3 ई टू द पावर आयटा pi by 2. So this is the exponential form for 3 iota. So this is how we can identify the various form for a complex number, and among these forms we have a form, particular form, that is exponential form due to the complex exponential function. तो यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो हमें एक और वेराइटी प्रोवाइड कर रहा है टू राइट अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये एक किसका यूटिलिटी हो गया है। अब हम बात करते हैं एक और डिफरेंस की बिटवीन द रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो अभी कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जब अभी हमने कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ किया था तो हमने देखा था कि complex exponential function is like this. This is e to the power x. This point is 0,1. Okay. Now यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि किसी भी वैल्यू के लिए हमेशा ये 1 1 फंक्शन है। कभी भी ये अपनी कोई भी वैल्यू को रिपीट नहीं कर रहा है। रिपीट नहीं कर रहा है तो अगर हम और जनरलाइज्ड वे में देखें तो ये एक वैल्यू को बार बार रिपीट नहीं कर रहा है। इसका मतलब इसके अंदर कोई एक पीरियड नहीं है, कोई एक टाइम नहीं है जिसके बाद ये अपनी वैल्यूज़ को रिपीट करेगा। बट अगर हम कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन देखें तो इसका मीनिंग, इसका जो एक्सप्रेशन है वो हमें क्या बताता है? ई टू द पावर एक्स कोस वाई प्लस आयटा साइन वाई। हमें ये पता है कि कोस और साइन हर 2 पाई के बाद में अपनी वैल्यू को चेंज वापस रिपीट करेंगे। वी नो दैट, है ना? द पीरियड ऑफ कोस एंड साइन इज 2 पाई। दैट मीन्स अगर हम ई टू द पावर जेड की वैल्यू को आइडेंटिफाई करें, वैल्यू को, तो उस केस में 2 पाई के बाद ये हमेशा वैल्यू रिपीट करेगा। y इक्वस टू 2 पाई के बाद ये वैल्यू रिपीट करेगा। तो अगर हम यहाँ पर इसकी वैल्यू को इंटरप्रेट करें इस एक्सप्रेशन में तो हमें क्या मिलेगा? ई टू द पावर z दैट इज इक्वल्स टू
e to the power x plus iota y, that will be same as e to the power x plus iota y plus iota 2 पाई। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू एक्सप्रेशन क्या बनेगा, y प्लस टू आएटा टू पाई एंड y प्लस टू पाई, जो कि सेम ही हमें एक्सप्रेशन देगा जो कि e टू द पावर z के लिए था। ठीक है, इसका मतलब ये जो वैल्यू है जिसको ऐड करने से इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, और चाहे हम 4 पाई ऐड करें 6 पाई ऐड करें हमेशा यही वैल्यूज़ आएंगी। बट यहाँ पर जो हमें एक इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन मिल रहा है वो क्या है कि 2 pi iota will provide a period for this complex exponential function। ठीक है, so we have e to the power z plus 2 pi iota is same as e to the power z, those those two values are same। ठीक है, for all complex number, for all complex number z। Okay, so at for it as a conclusion we can say the complex exponential function is periodic with imaginary period 2 pi iota। ओके, ये इमेजिनरी पीरियड है इसका।